Workbook problem discussion, question number 12, part 2, part B. Find all the roots of the equation px square is equals to 0. So you must have completely factorized px in part A, and that comes out to be 12 to B. So that came out to be px equals x minus 2 whole square x plus 4. Is this correct? Marine? Yes, ma'am. Okay. So now we need to solve px square. That means you replace every x with x square. So x square minus 2 whole square and x square plus 4 and equate it to 0. First bracket x square minus 2 whole square is equals to 0, which is x square minus 2 is equals to 0 once you take square root on both sides, and x square is equals to 2, so x is equals to plus minus square root of 2. You can give the answer in exact form or in equivalent 3 decimal place. Answer although third form में रखो तो ज़्यादा अच्छा. Okay. उसके बाद second bracket would be x square plus 4 equals 0, which is x square equals minus 2. We haven't studied complex numbers yet, but since it says find all the roots, that means you have to find the real roots plus the complex roots. So you don't know this yet, but just for now, you can write x equals to plus minus 2, under root minus 2, which becomes plus minus square root of 2 iota. Okay, we'll talk more about this when we do complex numbers in a month, most probably. Hopefully sooner. Let's see. So that was question number 12 ka last part. Now let's quickly discuss question 13's last part, as requested by Mary. What about you, Fazil and Adan? सो गया था. Okay. You've studied log before. What about you, Adan? मैम ये तो मैंने स्किप किया था, आपने कहा था ना लॉग. अच्छा, एक हद तक तो हो सकता है, बिल्कुल लास्ट स्टेप नहीं हो सकता था. लेट्स गो एज फार एज वी कैन with the knowledge we have so far. Okay, so we notice that these are more or less the same equations. What is the relationship between these two equations or expressions? X is being replaced with py. X has been replaced with 3 power y. So this is actually p 3 power y. And you already have this factorized in part 1. When you factorized it, you got x plus 2, x 3x minus 2, and 4x plus 3. Okay, so now you're going to replace the x with 3y plus 2, 3 times 3y minus 2, and 4 times 3 power y plus 3, and equate it to 0. Now this is the factorized form. That means all 3 individual brackets can be equated to 0. So the first one gives us 3 power y is equals to minus 2. The second one gives us 3 power y equals 2 upon 3 when we equate it to 0. And the last one gives us 3 power y equals minus 3 upon 4. Now we need to use log after this point. So whenever you have a variable in the power, that means you have to use log. Ab log हमने पढ़ा तो नहीं है, but I'll just tell you what you need to do. Just a first introduction to log.
So whenever you have a variable in the power, you need to take log on both sides. So you take log on both sides in all the three expressions. Ln 3 power y equals ln minus 2. Ln 3 power y equals ln 2 by 3. And ln, which is natural log 3 power y, is equals to ln minus 3 by 4. There's an ln key in your calculator. If you enter ln minus 2, you'll get math error. If you enter ln minus 3 by 4, you'll get math error. So there's no solution for the first equation and the last equation. No solution. No solution. For this one, you have to apply a property of log, which is that this power can be written in the base. So y ln 3 is equals to ln 2 by 3. And now you can divide ln 3 with this side. And whatever is the answer of this is the value of y. So please quickly find ln key in your calculators. Fraction, numerator has ln 2 divided by 3 and denominator has just ln 3. Have you found ln? Don't know if you can see. On के नीचे एक c है और उसके नीचे ln है. ये वाली. On के एक की छोड़ के. This is giving me a minus 0.369. Yes, which is the correct answer. It says correct to 3 significant figures, so you need to strictly follow this. Y equals minus 0.369070. The the answer before rounding should be as large as possible, or at least till 4 decimal places. And the final answer is rounded to 3 significant figures. So this would be the answer. Okay. Let's do question 14. Question number 14. The cubical polynomial fx is such that the coefficient of x cube is minus 1. And the roots of the equation fx is equals to 0 are 1, 2, and k. What does it mean, the roots of the equation? x minus 1, x minus 2, x minus k. ये क्यूबिक इक्वेशन बना रही. ठीक है. So roots का मतलब है कि the values of x. So x equals 1, x equals to 2, and x equals k. So if you take these to the other side, you get x minus 1 as one factor, x minus 2 as the other factor, x minus k as the third factor. However, you're told that the coefficient of x cube is minus 1. If this is the factor, if these are the three factors, when you multiply x with x with x, your coefficient of x cube is positive, not negative. किसी एक को नेगेटिव कर लें फिर. मैम किसी एक को 1 minus x या 2 minus x कर दे. हाँ, ऐसे ही करेंगे. तो इसको लिख लेते हैं. अच्छा, मुझे बस 1 सेकंड देना है तो. Okay. So where were we? हाँ, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, we're getting plus x cube, not minus x cube. So you can fix that. इनमें से किसी एक को नेगेटिव x की फॉर्म में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल इसको. Let's write it as 0 is equals to minus x plus k. So you can rewrite the final factor as
minus x plus k instead of k minus x. It's the same thing. जब आप इसको expand करोगे, you will still get x is equals to k. और x minus k को भी expand करके x is equals to k ही आता है. So it's the same thing. Since we're told that the coefficient of x cube is -1, we need to ensure that one of these has a negative x. Okay. So yes, now we equate it to 0. Equate it to 0. Given that fx has a remainder of 8 when divided by x minus 3. What does that mean? Remainder theorem से हाँ. मतलब कि अब f3 is equals to 8. Yes. Now we're going to write f3 equals 8. Substitute 3 instead of x. 3 minus 1, 3 minus 2, minus 3 plus k, and give me the value of k from here. 7. 7 आता है, बाकी भी कर लें. मैम आपने मॉडुलस फंक्शन से ही शुरू करवाया, मतलब कि आपने निकाला दो. बस 15 क्वेश्चन करके ना ये वर्कशीट खत्म करके करेंगे मॉडल्स. ठीक है मैम. सेवन नहीं आ रहा, मेरा आंसर क्यों 7 आ रहा है? मैम 7 ही आ रहे हैं. अच्छा, you said 7 as well. Okay, बहुत ही short term memory. Okay, so k आ गया 7. Part B, the remainder of fx, the remainder when fx is divided by x plus 3. So remainder theorem again. This time we're going to use the found value of k and substitute -3 instead of x. So f -3 find करना है. So that is going to be -3 minus 1, -3 minus 2, -3 plus 7. What is this? 80? Maximum 100 आंसर आना चाहिए. मैम 125 आ रहा है मेरा आंसर. मैं आंसर चेक करती हूँ. Question 14 का आंसर is मैम वैसे अपने -3 को +3 करना था 7 के साथ है, क्योंकि अब k माइनस एक्स था वो, इसलिए ठीक है. k ठीक और है, माइनस माइनस से प्लस हो जाता है. 200 उससे आंसर आ रहा है क्योंकि यहाँ 200 लिखा हुआ. Let's see. What is my mistake? कि -3 था तो फिर -x ने +3 हो जाना था. Okay, so then this would be 10 and we'll get 200. ठीक है. Heather, have you found your mistake or were you getting 200? I'm found. ठीक है. Okay, last question and then inshallah we start modulus function. The polynomial this, where a and b are constant, is denoted by px. It is given that px is divisible by x square minus x plus 2. Find the values of a and b. थोड़ी अजीब सी long division होने वाली है because there's an a here and a b at the end. Let's see how it goes. 4x power 4 plus ax square plus 11x plus b. नहीं, 0x cube होना चाहिए. Plus 0x cube plus ax square plus 11x plus b. Okay. And here we have x square minus x plus 2. Okay. So the first value in the quotient is going to be 4x square. So we have
4x power 4 minus 4x cube plus 8x square. Change the signs. Minus plus minus cancels out. We have 4x cube and plus bracket a minus 8x square, and then plus 11x plus b. Next value in the quotient would be 4x, so plus 4x. So we have 4x square, sorry, 4x cube minus 4x square plus 8x. Minus sign here, plus sign here, minus sign here. So this gets cancelled out. A minus 8 plus 4 would be a minus 4, because minus 8 plus 4 is minus 4. Bracket x square, then plus 3x plus b. Okay. So the next expression in the quotient is going to be a minus 4. So that's going to be a minus 4x square minus a minus 4x plus 2 times a minus 4. Change the signs. Minus plus minus. This cancels out. Very carefully, let's see what the coefficients of x is. Coefficient of x would be 3 plus a minus 4. That's going to be 3 minus 1. Sorry, a minus 1. A, 3 minus 4 is minus मैम 1. हाँ, मैम इसमें एक और मेथड नहीं हो सकता कंपेयरिंग करके? मैम देखिए, जो a माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b, इसको अगर हम जो डिवाइजर है उसको टाइम्स 3 करेंगे तो उसको कंपेयर करके फिर नहीं किया जा सकता? मुझे समझ नहीं आई हैदर, दोबारा बोलो। मैम कंपेयर की नहीं किया जा सकता डिवाइजर के साथ a माइनस 4 होल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b को? क्योंकि आप अगर टाइम्स 3 करेंगे उसको तो फिर डिवाइजर के साथ कंपेयर हो सकता है मेरे ख्याल से। इसको कंपेयर कर लें, ये कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं यस मैम, यस मैम। इसको कंपेयर कर लें और बाय ऑप्ट्यूशन कर लें कि 4x स्क्वायर होना चाहिए, अगला क्या होना चाहिए? यस मैम। मुझे लगता है नहीं हो सकता, एक सर्टेन पॉइंट के बाद नहीं हो सकेगा। 4x स्क्वायर तो समझ आ जाएगी, लेकिन आगे नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये दोनों 3 टर्म्स हैं। अगर एक लीनियर होता है ना और एक क्वाड्रेटिक होता है तो फिर बाय इंट्यूशन आसान होता है, बट इस पे तो मुझे लगता है काफी मुश्किल होगा। बट करके देखना और मुझे वर्किंग दिखाना अगर आपसे हो गया। ठीक है ठीक है, मैम। ओके। मेरे ख्याल में काफी काफी कॉम्प्लिकेट होगा अगर उस तरह करने की कोशिश में। एनीवे, and now let's add the constants. So plus b and then minus all of that. So the constant term is going to be plus b minus 2a plus 4. ये पूरी एक constant term। अच्छा, अब क्वोशंट में हम कुछ ऐड कर सकते हैं टॉप पे। प्लस 8 हो गए। प्लस 8 होगा, यस, थैंक यू। प्लस 8 जी। अब क्वोशंट में कुछ ऐड हो सकता है further? Can this be further solved? ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ओके, यस। क्या यहाँ पे कुछ फर्दर ऐड किया जा सकता है? फ्रैक्शन यहाँ आ पे सकती है 1/x? जी। नहीं, हम पावर्स नेगेटिव में नहीं लेके जाते। डिसेंडिंग पावर होती है x की,
और वो x पावर 0 पे रुक जाती है. So we already have x power 0. Can't go till x minus 1. ठीक है. तो the division stops here. इससे further long division नहीं हो सकती. जब आपके पास एक प्लस कांस्टेंट आ गया ना, उसके बाद कोई छोटी x की पावर नहीं एग्जिस्ट करती. So that means this is your remainder. However, the remainder should have been 0 because this is a factor. तो अब इसको 0 के इक्वल होना चाहिए. अच्छा, इसको छोड़ते हैं, इधर बात करते हैं. अगर you have a linear equation ax plus b and you're told that this is equals to 0, तो a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी? The answer should be equals to 0. Then what should be a and what should be b? मैम इंट्यूशन से आगे से आंसर. चलो मुझे पिक्चर भेजो. इंट्यूशन से मैं देखती हूँ कैसे खेल. जी बस बताएं. p तो 0 होगा और a और x में से भी दोनों में से कोई एक 0 होगा. हाँ, x की तो हम बात ही नहीं कर रहे. x कुछ भी हो सकता है, दोनों कांस्टेंट. 0 होंगे. हाँ, ये भी 0 होगा क्योंकि 0x plus 0 will give you an answer of 0. So keeping that in mind, this coefficient must be 0 and all of the constant must be 0 as well. ये भी 0 होगा. If the remainder is equals to 0, that means the coefficient of x must be 0 and the constant must be 0. So a minus 1 should be equals to 0 and the constant being added to it, that must also be equals to 0. So we're getting a equals 1 and then b minus 2 times 1 plus 8 is equals to 0. B equals minus 6. A is 1 and B is minus 6. That's it. When a and b have these values, find the real roots of the equation px is equals to 0. So you already have px in factorized form. We have x square minus x plus 2 bracket 4x square plus 4x, and a minus 4 would be 1 minus 4, which is minus 3, equals to 0. So most probably one of these is not real. That's why it says find the real roots of the equation. So isme you have to show that the discriminant is less than 0. B square minus 4ac, we're checking minus 1 whole square minus 4 times 1 times 2. 1 minus 8 is minus 7, less than 0. So no real solution. And for the other one, we'll probably get a real solution. I'm going to check that with my calculator. A is 4, B is 4, C is minus 3. So I'm getting x equals half and x equals minus 3 over 2. And I'll take this one step back, 2x minus 1 in one bracket and 2x plus 3 in the other bracket equals to 0. And let me take the answers. Minus 3 over 2 and 1. 4x square plus 4x minus 3. 4 minus 3. I think मैंने आंसर गलत लिखा हुआ है. Let me check at the back. Half and minus 3 over. ठीक. मैम वो मेरी वर्किंग भी देख ले तो. मैं देखती हूँ. I think मैं अपना कैलकुलेटर ही नहीं लाई. I mean फोन ही नहीं लाई. मैं व्हाट्सएप पे चेक कर लेती. देखो
Let me cut paste it in the on the board. बहुत थोड़ी सी वर्किंग है. Let's take a look. क्या किया है there? ओके आपने क्या किया है a माइनस 4x² प्लस 3x प्लस b. अच्छा आपने यहाँ से कंटिन्यू किया है इधर. यस अच्छा यहाँ तक आपने लॉन्ग डिवीजन ही की है. ठीक है. उसके बाद आपने इसके बाद क्या किया मुझे एक्सप्लेन करो. मैं पूरे को -3 से मल्टीप्लाई किया ताकि 3x इक्वल हो जाए, फिर कंपेयर किया मैंने. आपने इसको कर दिया -3 से मल्टीप्लाई, सो यू गेट -3x² प्लस 3x minus 6 and then you compared the two. यस अच्छा अब ये किया क्यों है. रुको. ठीक है इधर. दिस वर्क्स जस्ट एज वेल. ठीक है मैम, बस यही पूछना था. गुड. ठीक है. चलें मैं ना ये वीडियो एंड करके नया लिंक भेज रही हूँ, फिर मॉडल फंक्शन स्टार्ट करती हूँ. ठीक है. आई एम एंडिंग दिस लेसन.